Hey, hi everyone. Hopefully, I'm audible and visible properly. Just uh, tell me in the comment section, is everything fine? Okay, everything is good. So, we are starting calculus today. We'll go through the introduction of the calculus first, and then we'll proceed to the class. And I'll be telling you कि ये जो course है ये किस तरह से run करेगा, what all the things will be covering here, and how can it be beneficial to you. The people who cannot afford the paid courses, तो वो कैसे इससे maximum benefit ले सकते हैं. All right. So this session is for mathematics optional. Let's first discuss the syllabus of the calculus. It is asked in your paper 1 maths optional, and section A. Section A. The syllabus which is included in it: limit and continuity, limit, continuity, differentiability, in case of one variable or in case of two variables or in case of several variables, two or several variables. Second, we have the extreme values of the function, extreme values of function in case of one or several variable, in case of two or several variables. See, I'll be coming up with a session on detailed discussion related to maths optional. So there I'll be covering the book list that you need and the strategy that needs to be followed, है ना. तो वो उसके लिए एक पूरा सेशन लगेगा. मतलब बुक लिस्ट ऐसे छोटी नहीं है. देर आर आई गेस 2 to 3 बुक्स पर सब्जेक्ट, एंड इन टोटल देर आर 13 सब्जेक्ट्स. सो इफ़ आई टेल यू द बुक लिस्ट नाउ, तो ये पूरा सेशन बुक लिस्ट में ही चला जाएगा. So let me come up with a session for 2026 people. So that will be the detailed discussion on a maths optional. By the end of this month that session will be uploaded, है ना. एंड ऑफ द मंथ तक अपलोड हो जाएगा. सो उसमें बहुत अच्छे से मैं गाइड कर पाऊँगी. सो दिस सेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेटजी और एनी काइंड ऑफ बुक लिस्ट, है ना. तो ये एक तरह से हम कैलकुलस सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो जनरल सेशन के लिए you can if you have general doubts related to maths optional ना, प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. सो मैं सबको उसमें इंक्लूड कर दूँगी. सो एक अलग से सेशन रखते हैं उसके लिए. एंड ऑफ द मंथ तक I'll be अपलोडिंग. ठीक है. सो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ टू और सेवरल वेरिएबल्स, रॉल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, L'Hopital rule, L'Hopital rule, partial derivatives, Jacobian. Fifth, we have definite integral, double and triple integral, area, surface area and volume, double, triple integral, surface area and volumes, asymptotes and curve tracing, So this is roughly the syllabus of calculus. Obviously there are subtopics inside this syllabus, but मोटा मोटा यही सारे topics हैं. These are like major topics in your syllabus.
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू विल स्टिक टू द सिलेबस एंड द एग्जाम क्वेश्चंस. एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है दैट वी विल डिस्कस हियर. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे हमारे पास है जैकोबियन. अब इसके लिए देखो जो 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स है वो आपको आने चाहिए, है ना. तो आई एम एज्यूमिंग कि वो आपने पढ़े हुए हैं और अच्छे से पढ़े हुए हैं. जैसे कि डिफ्रेंसिएशन यूज़ होगा, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन यूज़ होगा, इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड. तो मेन तो यही है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर नहीं है तो कहीं पर भी फॉर्मूले डाउनलोड करके रख लो. तो जब वो फॉर्मूले आप यूज़ करोगे तो अपने आप चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि इट इज़ जस्ट दैट कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तो वो अभी इरेज हो गया होगा. सो यू मे नॉट राइट नाउ यू मे नॉट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले. तो वो हेल्प ले सकते हो आप कहीं से भी, फॉर्मूले का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम नॉट गोइंग टू टीच द वेरी बेसिक थिंग्स हियर. सो आई एम एज्यूमिंग कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर हैं. ठीक है. और ये जो कोर्स रन करेगा इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे. जैसे जैकोबियन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. तो वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर जैकोबियन, वट एवर बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, वी विल बी कवरिंग दोज एज वेल. सो यहाँ जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनके सबके बेसिक्स भी कवर करेंगे एंड द टॉपिक विल रिमेन इन डेप्थ along with previous year questions plus practice questions, है ना. तो बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करना है. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी जैकोबियन. when we want to change set of variables, certain set of variables into some other set of variables, we use Jacobian. See, for example, let's suppose while evaluating any integration, कोई इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते टाइम मैंने x को पुट कर दिया टी स्क्वायर. आई सब्सटीट्यूटेड x एज टी स्क्वायर. सो आई सिंपली मीन कि dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा. दिस मच यू नो, dx विल बी इक्वल टू 2t dt. ऑपरेटर को भी तो t में चेंज करना पड़ेगा ना. ऑपरेटर हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू t बिकॉज आई एम चेंजिंग वेरिएबल x इनटू वेरिएबल t. बट लेट्स सपोज आई हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल जो हम डबल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो उसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स होते हैं. सो द इंटीग्रेशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स. सो अब अगर मैं x को मान लेते हैं कि टी स्क्वायर पुट कर देती हूँ एंड आई एम पुटिंग y एज इक्वल टू लेट्स से t, y एज t, x एज टी स्क्वायर. तो dx dy किस में चेंज होगा, द क्वेश्चन इज दैट. बिकॉज अब तो सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब तो एक ही वेरिएबल था, आई हैड ओनली वन वेरिएबल x. सो dx वो चेंज्ड इनटू dt, बट dx dy को कैसे चेंज करेंगे. तो यहाँ पर एंटर होता है जैकोबियन. ठीक है. तो जैकोबियन कहते हैं कि dx dy कैन बी चेंज्ड इनटू जैकोबियन into d, I mean to say I should have two variables here. So let's suppose y is equal to some other variable as well, t plus z. So there are two variables and two variables are to be changed into two new variables. तो यहाँ पर जो दो new variables हैं those are t, z. So dx dy is to be changed into dt dz. तो यहाँ एंटर होता है पिक्चर में जैकोबियन. तो यहाँ हम जैकोबियन का यूज़ करके इस वेरिएबल को dx dy को dt dz में चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ जैकोबियन. वी विल लर्न इट लेटर. एंड द सेकेंड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दोज आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ जैकोबियन, कि डायरेक्टली जैकोबियन कंप्यूट करो. थर्ड जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन टू चेक डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी ऑफ फंक्शंस, कि दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस गिवन है, आपको चेक करना है वेदर दोज फंक्शंस आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जैकोबियन आपको यूज़ होंगे.
आपको पूछे जाएंगे कैलकुलस में. एंड दैट्स हाउ जैकोबियन इज यूज्ड इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस. Understood everyone? So let's first understand what Jacobian actually is. Then we'll do questions based on each and every type. ठीक है? So when we want to change certain set of variables into some other set of variables, we use Jacobian. So let कर लेते हैं. Let x is a function of u and v. Y is a function of some other function of u and v. Some other function of u and v. Then Jacobian of x comma y with respect to u comma v. This is known as, this notation is called Jacobian of x comma y with respect to u comma v. With respect to u comma v. एंड इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल वी. एट टाइम्स दिस जैकोबियन विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल एज वेल. इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ डेल एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई डेल यू कोमा वी, because of the uses of partial derivative here. ठीक है? So del x by del u in the first row, del x by del v is the second entry in the first row, del y by del u, del y by del v. ठीक है? जैसे for example x is equal to u square plus v square and y is equal to u plus v. I have to evaluate j x comma y by u comma v. So the formula here is del x by del u, del x by del v, del y by del u and del y by del v. So this is equal to determinant of what is del x by del u? Del x by del u is equal to 2u. What is del x by del v? It is 2v. Partial derivative of x with respect to u and with respect to v. So my first row will be 2u and 2v. Del y by del u is equal to 1 and del y by del v is equal to 1. So my second row will be just 1, 1. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का? It will be 2, sorry ये 2v है ना, this is 2v. So the determinant of this matrix is 2u minus 2v, that is equal to twice u minus v. And this is my Jacobian. So जो मैं आपको बता रही थी कि अगर मेरे पास इफ़ आई एम राइटिंग x एज ए फंक्शन ऑफ u एंड v एंड आई एम राइटिंग y एज ए फंक्शन ऑफ u एंड v, तो मुझे dx dy को चेंज करना पड़ेगा इनटू du dv. सो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे जैकोबियन ऑफ x कोमा y विद रिस्पेक्ट टू u कोमा v एंड du dv. सो व्हाट इज द जैकोबियन हियर? 2 into u minus v du dv, and that's how this dx dy is changed into du dv, and that's how it will be used in integration, double integration. Understood everyone? Moving forward, we will be discussing certain properties of Jacobian. जैसे कि property number 1. Okay, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. लेट x इज इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू v. ठीक है, x इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू v. आई नीड टू इवेल्युएट जैकोबियन ऑफ x कोमा y विद रिस्पेक्ट टू u कोमा v. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ del x बाई del u, del x बाई del v, del x बाई del y बाई del u एंड del y बाई del v, del y बाई del v. इसमें थोड़ा और इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि यू राइट
जैसे कि यू राइट u plus v here. I'll tell you why we are doing this. इसको इस तरह से लिखो u plus v here. So this is equal to modulus. What is del x by del u? It is 1. Del x by del v, it is 1 again. Del y by del u, it is 0 here, right? And del y by del v, it is 1 here. It is 1 here. ये भी नहीं, एक्चुअली इसमें मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ. लेट्स टेक फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं यहाँ पर ना. आई मीन okay, let's assume x is equal to u plus uv, u plus uv, and y is equal to, let's say, u minus uv, u minus u into v, or you can simply write it as u minus u plus uv, or 2u plus 2v, 2u plus 2v, and we will write here as 3u. This is good. This is good. So this is equal to del x by del u, it is equal to 2. Del x by del v, it is 2. Del y by del u, it is 3. And del y by del v, it will be 0. So if I evaluate this determinant, it is equal to minus 6. Minus 6. अब एक काम करो. Here x is represented as a function of uv. Here y is represented as a function of uv. I mean to say I'm representing xy into uv. I'm transforming xy into uv. यहाँ हम रिवर्स करते हैं. uv को हम as functions of x and y लिखते हैं इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करके, राइट? तो यहाँ से u क्या आ गया? u is equal to y by 3 here. And you put y by 3 in the first equation, you will get the value of v. So x is equal to 2y by 3 plus 2v. So it implies 2v is equal to x minus 2y by 3. 2y by 3. So I'll get v as equal to 1 by 2 x minus 2y by 3. 2y by 3. So what do I have now? मेरे पास u as a function of x and y है y by 3, and v as a function of x and y I have 1 by 2x minus y by 3. y by 3. अब यहाँ पर आप जैकोबियन निकालो u v का with respect to x and y. रिवर्स कर दो. यहाँ पर I was evaluating xy with respect to uv. Here let's evaluate uv with respect to xy, because now my u and v are functions of x and y. So इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? del u by del x, because अभी न्यूमरेटर में u है, इन द डिनोमिनेटर आई हैव x and y, तो मैं u v को चेंज कर रही हूँ x and y में. सो मेरा जो डेरिवेटिव है दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y नाउ. Similarly, del v by del x and del v by del y by del y. We have to take the determinant of this. So this is equal to determinant of what is del u by del x? It is 0. Del u by del y, it is 1 by 3. Del v by del x, it is 1 by 2. Del v by del y, it is minus 1 by 3. And if you find the determinant of this matrix, it will be minus 1 by 6. Did you observe any relation between this minus 6 and minus 1 by 6? So basically क्या होता है? Jacobian of x comma y with respect to u comma v is equal to inverse of Jacobian of u comma v. Basically what happens here is Jacobian of x comma y by u comma v
इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ, अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं, u कोमा वी बाई एक्स कोमा वाई. दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द Jacobian. This is the very first property of the Jacobian. So this is property number 1. Property 1. Understood? So अगर हमें Jacobian निकालना है xy with respect to uv and uv with respect to xy, तो आप इन्वर्स करके निकाल सकते हो. ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. नेक्स्ट आई हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2. जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड u v इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, z इज इक्वल टू u v w. फाइंड Jacobian of x comma y comma z with respect to u comma v comma w and Jacobian of u comma v comma w with respect to x comma y comma z. Solution. So अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मुझे ये Jacobian इवेल्युएट करना है, then I should have x as a function of u, v and w explicitly. I should have y as a function of u, v and w so that मैं partial derivatives निकाल सकूं. z should be a function of u, v and w, है ना, ताकि मैं partial derivatives निकाल सकूं. So ये explicit functions होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने implicit functions वाला नहीं किया. मतलब अगर ये combination में भी दिए हुए ना और आप express नहीं कर पा रहे हो, if you are not able to express x, y, z as a function of u, v, w, even then we can find Jacobian. But we have not studied that rule. So अभी तक I only know one thing, that I should express x, y, z as a function of u, v and w. Only then I'll be able to find Jacobian. Okay. So अब लेकिन यहाँ से हम x, y, z को निकाल सकते हैं ना in terms of u, v, w. कैसे? जैसे y प्लस जेड अपना u v के इक्वल दिया गया है, मैं इसको इसमें पुट कर दूंगी. सो आई हैव u इज इक्वल टू x प्लस यू वी. सो फ्रॉम हियर आई हैव x इज इक्वल टू u माइनस यू वी. सो मुझे x मिल गया ना एज ए फंक्शन ऑफ u v w. सिमिलरली मैं y निकाल देती हूँ बिकॉज z मुझे ऑलरेडी दिया गया है u v w विच इज़ ऑलरेडी ए फंक्शन ऑफ u v w. राइट एवरीवन. सो सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में z को पुट कर दो और y निकाल दो. सो y क्या आ गया? u v माइनस u v w. सो दिस इज माई फंक्शन ऑफ u v w, सेकेंड फंक्शन ऑफ u v w. सो नाउ आई हैव x as a function of u v w, y as a function of u v w, z as a function of u v w. तो इन दोनों में से आई कैन इवेल्युएट दिस Jacobian, बिकॉज इस Jacobian को इवेल्युएट करने के लिए मेरे पास u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए एंड v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए एंड w एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए, है ना. अब यार u v w को अगर यहाँ से निकालोगे ना इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी. I mean, if you want to find u v w in terms of x, y, z, then it will lead to complexities. Because u तो चलो ठीक है ऑलरेडी गिवन है. मान लो कि आपने u को यहाँ पुट किया तो यहाँ से v मिला, बट v एक रैशनल फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव्स भी कॉम्प्लेक्स होंगे. रैशनल फंक्शन के डिवीज़न रूल लगाना पड़ेगा आपको. फिर यहाँ पर आप u इंटू वी को पुट करोगे y प्लस जेड, w विल अगेन बी रैशनल फंक्शन. ठीक है, तो इसको रहने देते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1 से आई टेक रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, तो मुझे सेकंड मिल जाएगा. सो आई इवेल्युएट नाउ Jacobian ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू u v w. Jacobian ऑफ x comma y comma z with respect to u comma v comma w. So this is equal to modulus del x by del u
del x by del v. Since I have three variables now, three variables to be changed into three variables, del y by del u, del y by del v, del y by del w, del z by del u, del z by del v, del z by del w. So this is equal to determinant of del x by del u, which is कहाँ है x, ये है ना x. सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस वी, 1 माइनस वी. del x by del v will be minus u, del x by del w is 0 only. Del y by del u, y is this, so del y by del u will be v minus vw. Del y by del v, it is u minus uw. With respect to w, it is minus uv. Del z by del u, it is vw. Then with respect to v, it is uw. With respect to w, it is just uv. इसका डिटर्मिनेंट हमें इवेलुएट करना है, ठीक है. इजंट इट सिंपल. सो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट निकाल दो, 1 माइनस वी इंटू यू माइनस यू डब्ल्यू प्लस यू इंटू ब्रैकेट ओपन यू वी इंटू वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू वी डब्ल्यू. ऑल राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी ब्रैकेट यू स्क्वायर वी और एक सेकेंड, मैंने इसमें कुछ स्किप कर दिया फर्स्ट डिटर्मिनेंट में. सो वी विल हैव प्लस यू स्क्वायर डब्ल्यू वी हियर. सो माइनस यू स्क्वायर डब्ल्यू वी प्लस यू स्क्वायर डब्ल्यू वी प्लस यू इंटू यू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू. कैंसल हो रही हैं टर्म्स इसमें. फॉर एग्जाम्पल दिस गॉट कैंसल्ड आउट, सो आई हैव यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर. ये तो कट ही गया ना, काट ही दो. हाँ, सो दिस गॉट कैंसल्ड आउट और ये भी कैंसल आउट हो रहा है. दिस गॉट कैंसल्ड आउट, सो आई एम लेफ्ट विद यू स्क्वायर वी ओनली. So Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w is equal to u square v. ठीक है. अब मुझे चाहिए इसका इन्वर्स रेसिप्रोकल एज वेल. आई नीड Jacobian u, v, w with respect to x, y, z as well, x, y, z as well. So इसी का रेसिप्रोकल ले लो, 1 by u square v, 1 by u square v by property number 1. Understood? So by property 1. So I don't need to go long way, है ना. इस तरह से करोगे कि आप पहले फाइंड करोगे u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, w एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड इट इज़ नॉट फिजिबल एवरी टाइम टू डू सो, है ना. हमेशा वो चीज़ फिजिबल नहीं रहेगी, ठीक है. तो आप ये देखो कि किस तरह कौन सा वाला इवेलुएट हो सकता है. देन यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दैट, यू विल गेट द अदर जैकोबियन एज वेल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर to discuss the next property of Jacobian. Okay, next property is property number 2. इसमें क्या रहेगा, let ui's are given as functions of yi's, are functions of yi's, and yi's are further functions of xi, further functions of xi. I mean to say u1, u2, u3 up to so on. u1 is a function of, let's say u1 is a function of y1, y2, up to so on yn, है ना. And u2 is a function of again y1, y2, up to so on yn.
एंड जो y1 y2 yn है ना, y1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, x1 x2 x3 up to so on xn. y2 is a function of x1 x2 xn, x1 x2 xn. Understood? So u is a function of yi and yi is a function of xi. और हमसे पूछा गया है Jacobian of u1 u2 up to so on un with respect to x1 x2 up to so on xn. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स लिमिट द नंबर ऑफ फंक्शंस हियर, है ना. मान लेते हैं कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं, आई हैव u1 एंड u2. ठीक है, आई हैव u1 एंड u2. u1 इज ए फंक्शन ऑफ y1 y2 y1 comma y2. u2 इज ए फंक्शन ऑफ y1 comma y2 y1 comma y2. अब y1 इज फर्दर ए फंक्शन ऑफ x1 x2. अंडरस्टूड? y2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2. यहाँ पर phi1 ले लेते हैं. सो दिस इज psi1 x1 x2. सो आर यू गेटिंग मी? सो u इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x. u डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है यहाँ पर, बट हमें जो जैकोबियन पूछा गया है दैट इज ऑफ u1 u2 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, but u1 is not directly a function of x1 x2. u2 is not directly a function of x1 x2. It is like u1 comma u2 are functions of y1 and y2 and y1 y2 are functions of x1 x2. लेकिन हमें जाना कहाँ है? u1 u2 से x1 x2 में जाना है हमें. ठीक है, सो उस केस में क्या करना होगा? सो इन सच ए केस व्हाट यू विल डू इज you will find Jacobian of u1 u2 up to so on un with respect to y1 y2 yn y2 yn. मतलब आप क्या करोगे? आप पहले यहाँ से यहाँ जाओगे, u1 u2 से जाओगे y1 y2 में, and from y1 y2 you will go to x1 x2 and you will multiply this Jacobian to this second Jacobian, that is y1 y2 up to so on yn divided by x1 x2 up to so on xn. So since you can't directly go from u to x, you will go it via y. So you will first go u to y and then you will go to y to x. So first Jacobian will be taken of u with respect to y, then y with respect to x will be multiplied to it. Understood everyone? So that's how you will do this. Now now let's do another question. Next question is, let x is equal to r sin theta cos phi, r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta, z is equal to r cos theta. Find Jacobian xyz with respect to r theta phi, xyz with respect to r theta phi, and Jacobian r theta phi with respect to xyz, with respect to xyz. Now here xyz are functions of r theta phi. This is a function of r theta phi.
r comma theta comma phi. This is another function of r theta phi. This is another function of r theta phi, है ना. तो यहाँ पर x y z are explicitly written as functions of r theta phi. तो ये वाला जैकोबियन इवेलुएट करना ईजी है ना, क्योंकि आर थीटा फाई को एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो. तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी, रेसिप्रोकल ऑफ Jacobian xyz with respect to r theta phi. This is it, na? So solution. So Jacobian xyz with respect to r theta phi, with respect to r theta phi is equal to, you take the determinant del x by del r. क्या आएगा, sin theta cos phi, sin theta cos phi, del r by del theta, that is r cos theta cos phi, del x by del phi, which is minus r sin theta sin phi, sin theta sin phi. Okay, then del y by del r, sin theta sin phi, sin theta sin phi, del y by del theta, that is r cos theta sin phi, cos theta sin phi, then del y by del phi, which is r sin theta cos phi, sin theta cos phi. Then with respect to del z by del r is cos theta, del z by del theta is minus r sin theta, del z by del phi is basically equal to 0. Now you evaluate this determinant. You evaluate this determinant, क्या आता है? Evaluate this determinant. यस, सो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम डेडिकेट हो गया, इसको ज़्यादा टाइम एलोट हो गया. सो इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा. आई गेस इट मस्ट बी डन, है ना. सो आर स्क्वायर साइन थीटा, so r squared sin theta will be the answer here. Its answer is r squared sin theta, r squared sin theta. हमें चाहिए अब the inverse of this as well. We need reciprocal of this as well. So Jacobian of r theta phi with respect to x comma y comma z will be equal to 1 by r squared sin theta, r squared sin theta. So these are my answers, है ना. These are my answers. Next question is based on property number 2. तो let's suppose हमारे पास P given है as x plus y plus z, Q is given to us as x square plus y square plus z square, and R is given to us as 1 by 3 into x cube plus y cube plus z cube. Also we are given P as equal to u plus v plus w,
QS equal to UV plus VW plus UW. R is given to us as UVW. हमें पूछा गया है find Jacobian of UVW with respect to XYZ. ये हमसे पूछा गया है UVW with respect to XYZ. ठीक है. सोल्यूशन. सो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है देर आर 3 सेट ऑफ वेरिएबल्स हियर, है ना. देर आर 3 सेट ऑफ वेरिएबल्स हियर. लेट्स असेस. एक सेट हमारे पास है PQR का. PQR आर गिवन एज फंक्शंस ऑफ XYZ एंड PQR आर गिवन एज फंक्शंस ऑफ UVW एज वेल. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है UVW विद रिस्पेक्ट टू XYZ. सो हमें UVW से XYZ में जाना है. तो कैसे जा सकते हो? सोचो. सो Jacobian ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू XYZ, X, Y, Z. UVW से PQR में जाया जा सकता है इजीली by taking reciprocal, है ना. By taking reciprocal of PQR with respect to UVW. So I can easily go from UVW to PQR, and from PQR directly I can go to XYZ. From PQR directly I can go to X, Y, Z. बस तो फिर हमें 2 जैकोबियंस इवेलुएट करने पड़ेंगे यहाँ पर. That's what property number 2 says कि if we have 3 set of variables, so हम वहाँ पर कहीं से भी कहीं में जैकोबियन फाइंड कर सकते हैं, है ना. So by using the chain rule. ठीक है. So यहाँ से UVW से PQR में जाएंगे and from PQR we will go to XYZ. पहले आप ये फाइंड करते हैं. Now you can only tell me कि UVW with respect to PQR easily फाइंड हो सकता है. Because UVW are not given as functions of PQR. Rather it is reverse. PQR are functions of UVW. So मैं इसका उल्टा फाइंड कर देती हूँ. I'll find its reciprocal, then I'll take inverse of that. So what you will do here is you will find Jacobian of PQR with respect to UVW. So this is equal to del P by del U, del P by del V, del P by del W, then del Q by del U, del Q by del V, and del Q by del W. Then further del R by del U, del R by del V, del R by del W. So determinant of this matrix. So what is del P by del U? It is V plus W. Then it is U plus W. I'm so sorry, not V plus W. It's the partial derivative with respect to U, so it will be just 1, 1, 1. Understood? Now del Q by del U will be V plus W, and this will be U plus W, and this will be U plus V. ये आपके पास आएगा VW, ये आएगा UW, और ये आएगा UV. ओके. सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब यार ये ना थोड़े ये बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक्स होती है. इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आता है, डायरेक्टली लिख रही हूँ. यू कैन इवेलुएट इट -V -W, W -U, U -V, U -V. ठीक है. U -V, V -W, U -W. नाउ आई नीड जैकोबियन. मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका रिवर्स चाहिए था. आई नीड जैकोबियन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू PQR. So I'll take inverse of it. So this is equal to 1 by minus V minus W, W minus U, and U minus V. Now evaluate the second thing. Jacobian of PQR with respect to XYZ. So this is equal to determinant of del P by del X, del P by del Y, del P by del Z. Del Q by del X,
del q by del y and del q by del z, del r by del x, del r by del y and del r by del z, del z. So this is equal to determinant of, ये आएगा 1 1 1 2x 2y 2z, and del r by del x will be 3x square by 3, so it will be just x square, so x square y square z square z square. So its determinant will be equal to twice y minus z into z minus x into x minus y. Try yourself ना, ये evaluate कर लेना determinant. Okay, okay, now I need Jacobian of UVW with respect to, sorry, PQR with respect to, क्या था, UVW with respect to XYZ, XYZ. So I'll first go to PQR, UVW to PQR, then from PQR I'll go to XYZ, XYZ. So you multiply these two, ये अपने पास है और ये अपने पास है, so we will multiply these two. So this is equal to 1 by W minus V, W minus U, U minus V into twice Y minus Z, Z minus X into X minus Y, and this is our final answer. This is my final answer. अंडरस्टूड. अब आपसे ये भी पूछ सकते थे वो कि जेकॉबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, है ना, तो इसका इन्वर्स हो जाता, तो इसका आंसर हो जाता डब्ल्यू माइनस वी, डब्ल्यू माइनस यू, यू माइनस वी डिवाइड बाई ट्वाइस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई. ऑल राइट एवरीवन, so we studied two properties of Jacobian here. Tomorrow we will be studying the third and the last property of Jacobian. ठीक है, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस कैसे चेक करते हैं, एंड ऑल्सो इफ देयर आर इम्प्लिसिट फंक्शंस आर गिवन टू अस, इफ इम्प्लिसिट फंक्शंस आर गिवन टू अस. इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन एज द फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स. सो वी कैन नॉट सेग्रीगेट द वेरिएबल्स इन एन इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस लेट्स से वाई टू द पावर 5 प्लस 1 मान लेते हैं, ये फंक्शन है. कैन आई राइट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई हियर? नहीं कर सकते ना, वी कांट राइट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई हियर. कैन आई राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हियर? आई मीन टू से, कैन वी कीप वाई ऑन वन साइड and take everything to the other side? We can't do that. So this is known as the implicit function. Implicit function. तो ये हम कल पढ़ेंगे. Jacobian of implicit function, and also we will study the dependence and independence of functions using Jacobian. Using Jacobian. Okay, so till then, bye-bye, take care. Hopefully you liked this session, and I'll see you tomorrow at the same time, 12 p.m. sorry.